Yes, we'll start now. Is it audible, online students? Yes, sir. Okay. So today's class will start with the next topic. So last class somehow we have completed what is the paging and how the multi-level paging along with the TLB helps us to reduce the timing as well as bringing the less size page into the memory. So then the next problem comes that before going to the problem, the next topic I'll just help you here. That is called as, let's assume that, I hope I have discussed this one. Let's assume that we have a 4 GB logical address space and we have a thousands program, 300 program. So we calculated that the total number of memory required for keeping the pages is almost 1 GB. But when you are bringing all the programs, all the programs cannot be kept inside the memory at a time. The reason is that if 300 programs, each program's address space is 4 GB, then 1200 GB RAM is required to keep all the 300 programs. But we don't have any 1200 GB RAM, rather we have only hardly 12 GB RAM or 16 GB RAM. Means all the processes cannot be kept inside the RAM at a time. Then what happens? Every program's few part is going to be present. What does it mean? If you can fill like this is my whole RAM. Is the program 1, this is this much, and there is a program 2, there is a program 3, like this. Every program has a 4 GB like this. Yes, and this is total is 4 GB. Then what's the idea is? The idea is basically the whole program, whole 3 programs cannot be kept it here. So this programs, this part will be kept it here, and this programs, this part and this part will be kept it somewhere else, and this programs, this particular part will be kept it somewhere else. Then what happens? Out of this 12 GB 3 programs data, few data will be stored inside the RAM, and the rest of the program's part is not stored in the RAM. But what you did, for every program, you create a separate page table where you are maintaining every pages of that program, which is not at all necessary. Why it is not necessary? Because this particular part is only kept it here. What is the necessity of keeping all information about all other pages? Similarly, only these 2 pages information is present inside your RAM. What is the necessity of keeping this particular page information? Means the whole page table which is created for my program is not at all necessary. Rather, you can say whatever the actual pages present inside the RAM as a page frame, why don't you keep only those pages information as a page table? Are you understand the point what I'm saying? For every program, you are maintaining a page table. In a page table, every page related to that program, you are keeping it. But now what is the idea? Since all the pages belongs to each program are not currently present in the RAM, then what is the necessity of maintaining an individual page table for each individual program? Are you getting? First you have to understand, then only next topic will be understood. What I'm saying, if there is a 3 programs, how many page tables you are creating? 3 page table. How many entries are present in each page table? The number of pages present in the program. But can your all pages of every program present in the RAM currently? No, because your RAM size is not that much. Means few of the pages of certain programs are currently present. Those pages are currently present in the RAM. Why don't you maintain only a page table which will keep the information about these pages, not related to any other pages? Yes. Then what will happen? I will create a 1 page table, and that page table will be a smaller size. The reason is that depending upon my number of frames, my page table will be that much. Agreed or not? First, because previously each page table size will be depend upon whom? Number of pages present in my logical address space. But I am saying for every
physical pages present here, I have to keep this information. Then my new page table has to be keep how many entries? The number of page frames present here, because RAM's pages are called as the page frames. If here there is a 10 page frames, then my number of entries in this page table should be 10 or not. And this kind of page table is called as a inverted page table. Yes. Pardon? No, not necessary. Here the whole program will be currently present where? The whole logical address space will be currently present where? Huh? Huh? The whole logical address space will be basically present where? Huh? The whole logical address space is present where? It is in the secondary device. Your A.out is present inside the secondary devices. Means everything is already present in the secondary devices. Whatever the part you need, that part only you bring it to this RAM and execute it. The rest of the part is still present there or not. Then what is the meaning of a page loss? Getting or not? Understood? Still, hello? Not listening. Come to the front. You come front now. You come up front. Then only you can listen. Last time you have done the distance. Not listen anything. Last 2 classes. One side you are sitting there, one side in the middle. Last to last class you are sitting there, not doing anything, plug point. Next class you are sitting in the middle, then also you have not done. Come. Then you listen. I am not telling you anything. You listen only. Okay. Understood? Then what you need? I need a single page table which will be maintained for this. So let's draw one diagram for this kind of things. So what is the idea? Idea is inverted page table. Some problems are there. Please ready for this inverted page table. Yes, assume that we have number of frames. Yes, so 1 frame, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so assume that it is 0, 0, 0 up to 1, 1, 1, and it is 1, 1, 0 and 0, 0, 1 like this. So 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1 in this manner. Okay, so these are how many pages? 8 page frames. There are n number of programs are present, P1, P2, like this, Pn. Yes, suppose this particular page belongs to P2's 3rd page. This is P1's 7th page. This is P1's 9th page. This is P6 4th page. This is P7th 3rd page. This is P6 5th page. This is P2's 8th page. And this is P3's 4th page. Assume that currently the RAM is filled with these many programs, some pages. Some programs 2 pages are present, some programs 1 pages are present, like this. Then what's our idea? Even if my P1 consists of, that is 16 pages. How many pages? The P1 has 16 pages. Means every program has how many pages? 16 pages. How many programs you have made? N. Then how many page table entry has to be made? Each program has a 16 entries. N programs has a n into 16 entries. So there will be 16 n entries is required if you maintain individual page table. But now what he does, he is not maintaining individual page table. What he thought, whatever the current page really you brought from the hard disk to the RAM, why don't you maintain the information only for those pages? Then how he has maintained? He created a new table called as a inverted page table. Yes, what is that? This is called as inverted page table. Yes, so how many entries has to be present in the inverted page table? Guess. How many entries are required? Exactly 8. Because he is keeping the information about these page frames. So number of page frames, how many? 8. Then 8 entries will be total there or not. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, 8. The numberings are same. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. That is 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Then 1, 1, 0 and 1, 1.
Okay, these are things. Then can you tell me in this case which page is present? In 000 which page is present? Sir, you can say, sir, P2's third page. This is P1's seventh page. This is P6 fourth page. This is comes as a P6 fifth page. This is coming P7th, little boring, third page. P1's ninth page. P2's eighth page. P3's fourth page. Can anybody tell me quickly? When you're creating a normal page table, their entries will be keep what? The frame address. But now you are not keeping the frame address. Rather, you are keeping which page is present in that particular frame. Now your frame address is indicating what? The indexes. But previously in this case, the page address is what? The page number. But here it is a frame number. So how many frames? 8 frames. So number of addresses are 8. But inside each table entry, what you are keeping? Basically, you are keeping that what is which programs, which page is present. Now come back to this. So suppose a CPU generates which address? Logical address. Logical address consists of what? 2 parts. What is that then? One is the offset, one is the page number. Okay. Suppose assume that the page number is 3 and logical address is 2. Got it? The offset is 2. How the searching will be done in normal paging? The 3 will be searched as per the third entry. You are getting a frame address, then frame address plus offset combined together get physical address or not. Yes? Now since it is 3, can you prefer to search this 3? How to search them? Can you search? Is it possible? Why not? Need that PID. Because very nice. Why? Because when I am giving the third page's second line, which third page? Here also there is a third page. Here also there is a third page. Can you distinguish which third page you need? No. Then what you need extra? Program. Yes, no? Each program will be identified by what? Each program uniquely identified by what? PID. Means you can say along with this page number, I have to give this PID. Then what will happen now? This PID and P is going to be searched here. Instead of searching only the page number, now you are searching by what? PID along with the page number. If my PID is become 7 and page number is 3 and offset is 2, can anybody tell me how it will work out? 7 and 3 will be searched here. Where it is found? It is basically found at this place. Fourth place. Am I correct? It is found here. Now can you tell me, once you find 7th page, 7th program's third page, where it is present? How can you know? 100 How can you know? plus 2. You say that, sir, which index it is present, that is there it is present or not. Like in 2 cases. In case of an array, how many types of searching you are making? Can anybody tell me quick? This is a C class. Linear search, binary search. No. Binary. That searching I am not asking. In which way the user can search? The user can search by index. बोलिए थर्ड इंडेक्स पे क्या डाटा है? बोल पाएंगे कि नहीं? और कोई बोलेगा ये डाटा कौन सा इंडेक्स में है? 2 चीज बोल पाएंगे कि नहीं? पर्टिकुलर डाटा कौन सा इंडेक्स में है या कौन सा इंडेक्स में क्या डाटा है? That is the. Can you tell me your paging, normal paging is what kind of searching? Linear. No. Is no example. Example दिया. एक बोला कि तो रैंडम है. हाँ, इंडेक्स दे आप वैल्यू बोलिए और एक सर्चिंग में मैं वैल्यू दे रहा हूं, आप इंडेक्स बोलिए. आप नॉर्मल पेजिंग में कौन सा टाइप का अप्रोच होता है? सर इंडेक्स से वैल्यू निकालता है. इंडेक्स से वैल्यू मिलता है. क्यों? We give the page number, we get this value as a frame address or not. But can you now tell me what you are searching? Are you searching 100 or you are searching 7th program's third page? 7th third page. What you are searching? 7th program's third page. आपको क्या मिला है as an input? 7th program's third page. This 7th program's third page is the content or it is the index? It is the content. मतलब आपको दिया गया है and you have to search the index. Got my point? Then A वाला line
जिस लाइन पे होगा that line is become my frame address or not. Then what to do? Simply take this frame address, combine with whom? Quickly tell me. This is combined with this offset. Now you are getting the physical address of this. Finish. That is inverted. खत्म हो गया? तो क्या रिड्यूस हुआ पहले बोल दीजिए, फिर डिफिकल्टी सोचेंगे. क्या रिड्यूस हुआ यहाँ पर? How many inverted page table will be present in the system? 1. क्यों 1? RAM एक है. Since my RAM is 1, definitely my inverted page table is 1. The number of entries in the inverted page table equal to what? Number of page frames. Page frames. No. Number of page frames are present here. Number of page frames depend upon what? Memory size. No. That's one. Number of page frames depend upon what? कैसे हम नंबर ऑफ पेज फ्रेम निकाल रहे थे लास्ट को? सर एक तो वो इंडिविजुअल फ्रेम का पेज फ्रेम निकाल पा रहे थे कि नहीं? पेज साइज जितना होगा, रैम साइज जितना होगा, डिवाइडेड कर देंगे तो नंबर ऑफ पेज फ्रेम आ जाएगा कि नहीं? यस. सो बेस्ड ऑन दिस, if you know this page size or the frame size, accordingly you can find the number of frames. If you have n number of frames, I have n number of entries, and inside each entry what is present? PID along with the page number. So when your CPU generates a logical address now consists of three things. What is that? One is called as the PID, second one is called as the page number, third one is called as the offset. Then what is first search? PID along with the page number has to be searched inside the page table. Once you get it here, then corresponding to this line, whatever the line number you are getting, that line number along with this offset will be combined together and generate a physical address. Done? Yes. Can you tell me now what is the difficulties? Sir, much longer time to find it. Yes. Searching time will be bigger. Why? Tell me, if index is given a value, what is the complexity? Index is given one. What is the complexity? One. Of 1. And 1 of 1 directly what? What is given? Index given or value? I mean, No, if index is given, index given value, then 1, yes. what is this? Order of 1 or not? Yes, Because yes. I is given, you are immediately saying what is Yes, A yes, of, yes. and your A of is nothing but a star of A plus I. A Which plus. is one computation. Yes, but here what is given to you? Value. Given. So when what's this value? You have to go either sequentially or you have to do binary. Binary log in. Binary search, again your inverted page table has to be sorted. That sorting requires extra things. Why? आप बोलोगे सर sorted में रखिए ना, क्या फर्क पड़ता है? Binary search login में काम हो जाएगा, but वो भी difficult है. Why? After a few milliseconds, your programs are come out from the CPU. If you have a thousands of program and very less size RAM, frequently your pages are removed from the RAM, again inserting new pages into the RAM. If the pages are removed, insert, remove, insert, means my inverted page table is changing very frequently. If inverted page table changing very frequently and you are applying their binary search, means very frequently you have to do the binary search. So if it is a log n continuously done, sometimes it will reach at n also. So which has no value. Then what should be the approach? Linear. Pardon, 1 minute. Sir, TLB use कर सकते हैं. Number of? नहीं समझ पाया. नहीं, मैं खुद क्वेश्चन नहीं समझ. Inverted TLB. 1 minute. मैं खुद समझ. क्या कोई बोल पाएंगे क्वेश्चन? पीडी क्यों नहीं लेंगे? एक एक पेज को क्यों यूज कर रहे हैं? हाँ बोलिए. वेरी नाइस. क्यों एक ही प्रोग्राम को पूरा यूज नहीं कर रहे हैं? वही क्वेश्चन है. क्यों पूरा प्रोग्राम को यूज नहीं कर रहे हैं? क्यों एक एक प्रोग्राम को यूज कर रहे हैं? एक एक पेज कहाँ? एक सपोज मैं बोल रहा हूं आपके पास ओनली 10 रूम्स है, ठीक है ना? एक रूम में एक आदमी रह पाएगा. एक रूम में एक आदमी रह पाएगा. अभी आए हैं 10 फैमिली मेंबर्स
and each family members has a son, daughter, parents. लेकिन वो रहना चाहते हैं, किसी को एक रहना है, जिंदा रहना है, जिंदा रहना है, क्या करोगे? दो फैमिली को रखोगे, 3 फैमिली को रखोगे और बोलोगे एक एक फैमिली का एक एक आदमी को जिंदा रख दीजिए, क्या करोगे? एक एक फैमिली को एक एक करके जिंदा। वही सिनेरियो यहाँ पर है, क्योंकि do you want only 2 or 3 programs at a time has to be shown in the screen? आप कभी कभी वार्ड वहां पर, VLC यहाँ पर जो एक्सटर्नल, वहां पर एक ब्राउजर 10 से 50 प्रोग्राम खोल के ऐसे रखे। 50 प्रोग्राम तो छोड़ दीजिए, when you tab click on the process, tab click, जो ब्राउजर में टैब क्लिक करते हैं, कितना टैब, कभी कभी 20-30 यूज कर देते हैं। ईच टैब बिलोंग्स टू इंडिविजुअल प्रोसेस। क्यों ऐसा है? कोई बोलेगा सर एक तो प्रोग्राम वो है, क्यों आप बोल रहे हो 20 टैब है तो 20 प्रोग्राम है, क्यों ऐसा है? एक टैब में अगर कोई जीमेल चला रहे हो, उसका रिप्लाई क्या उसी प्रोग्राम में आता है और एक टैब में आ जाता है? उसी में आता है, जिसमें उसी में, मतलब वो प्रोग्राम को पता है कि मैं कौन हूं, और एक में सपोज आप याहू चला रहे हो, सो याहू का डाटा याहू पेज में ही आएगा ना। सो इवन इफ इट इज n tabs, each tab becomes an individual process or not? So since you are running n number of processes at a time, do you prefer that only open 2 programs, all you close it, or better to run all these programs, a few part of this, few part of this, so that every program will be at a time run? I told you one time, if you are running 10 programs at a time, 10 programs in the screen, and your CPU speed is very slow, can you feel the presence of context switching? करोगे? एक बोला था ना, अगर बहुत स्लो मशीन में आप वर्ड, नोटपैड, VLC प्लेयर चला लीजिए, देखोगे VLC प्लेयर का गाना जो बज रहा है ऊ करके उसमें एक टाइप कर दोगे तो बंद, ऊ करके बंद हो जाएगा, फिर आ करके शुरू होगा नेक्स्ट लेवल का सॉन्ग। सो उसमें पता चल जाएगा कि योर CPU इज चेंजिंग फ्रॉम वन प्रोग्राम टू द अनदर प्रोग्राम। ड्यूरिंग दैट टाइम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रहा है। सो कॉन्टेक्स्ट स्विच के टाइम तो कुछ तो नहीं चलेगा, क्या चलेगा? पानी निकालो, खुद का बकेट में डालो। ऐसे कहते कि नहीं, अगर 2 पर्सन सर गीजर में पानी गर्म कर रहे हैं, उस टाइप का हो रहा होगा कि नहीं? सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, ब्रिंगिंग ऑल द प्रोग्राम्स एट ए टाइम। बट अगर कोई जानबूझ के thousands of programs बैकग्राउंड में चला लिया, what is going to happen? तो स्लीपिंग में चले जाता है। तो फील करते हो कुछ बाद माउस नहीं चलता है, माउस नहीं चल रहा होगा, 2 मिनट रुक जाओ फिर माउस प्रॉपरली चलेगा। मींस उस टाइम पे, ड्यूरिंग दैट टाइम there are many background processes are at a time running. If background processes are many, then he has to be manage all these programs one. नाउ देखिए, किसी का 2 प्रोग्राम से, सोच लीजिए अभी 7 प्रोग्राम से अभी 15 प्रोग्राम हो जाएगा। Then do you feel like that each one programs 2 pages at a time present? Very rare. What will happen? Every programs one page, that also not all programs. Why? You have 11-15 programs, but you have only how many page friends? 8. So maximum how many programs at a time run? 8 से ज्यादा नहीं है। और जो 7 वो कहां पर होगा? बैकग्राउंड शॉप में होगा कि नहीं? दैट इज शॉप स्पेस हम जो पढ़े थे। मींस व्हाट? इन ड्यूरिंग दैट टाइम योर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज वेरी स्लो। सो दैट्स व्हाई व्हाट दे आर प्रिफरिंग, इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग 1 or 2 programs, you bring multiple programs whichever can be satisfied. Is it okay? Your question? Okay, understood or not satisfied? No, not satisfied means not explaining. थोड़ा कंफ्यूजन। ओके, फिर मुझे पूछा। सो नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम यू आर फाइंडिंग? सर्चिंग द पेज, हियर इट इज ऑर्डर ऑफ व्हाट? एन। सर इसमें वो इन्वर्टेड टेल भी चलेगा? यू रिड्यूस इट, सीखे हैं हम डाटा स्ट्रक्चर में। कैन यू रिड्यूस इट? वैल्यू सर्चिंग कहां पर करते हैं? बाइनरी सर्च तो एप्लीकेबल नहीं हुआ, एक्सेप्ट वो हैशिंग में, बट बाइनरी सर्च यहां पर एप्लीकेबल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मल्टीपल प्रोग्राम्स आर स्विचिंग वेरी फास्ट। हाँ, वेरी नाइस। व्हाट इज सेइंग? व्हाई डोंट यू अप्लाई ए हैशिंग हियर?
तो TLB नहीं होगा? तो नो, टीएलबी तो पूरा अलग कंसेप्ट है। टीएलबी में क्या रहेगा, कौन सा प्रोग्राम का कौन सा पेज ओनली रहेगा। बट इफ यू सर्चिंग के लिए आप देखोगे, दिस सर्चिंग कैन बी रिड्यूस बाय व्हाट, बाय हैशिंग। I think. देखो व्हाट द हैशिंग सेज, यू गिव ए की, इट विल बी प्रोड्यूस ए वैल्यू। व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस की यहां क्या है, ये दोनों की है। ये वैल्यू क्या है, इंडेक्स। D of index. Is giving this index and along with the key, it will be faster or not. Yes, what the hashing says that it is a average constant time, means your searching has to be done with a average constant time. Why it is average constant, why it not is a constant time? हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 1 ही होगा, वो n भी हो सकता है। हाँ, एवरेज ले ले रहे। always can you think that your hash code will be, hash function will be generate the index immediately? May not. When it has to go for repetition during collision. लेकिन नहीं, when the collision, suppose my hash function is h of k equal to k modulus 10. If I give k is 33, modulus is 3. If I am giving you 43, modulus is 3. In this case, collision will be occur or not? To avoid this collision, what are the techniques you have studied? Linear, quadratic. ओपन एड्रेसिंग, सेपरेट चेनिंग, याद है तो? ओपन एड्रेसिंग में क्या है, लिनियर प्रूविंग, लिनियर, क्वाड्रेटिक, डबल हैशिंग, सब भूल गए, ये सब कुछ आता है। So that's why if you apply that hashing with this, then the searching will be faster, and that is called as a inverted hash table. Inverted hash table. हाँ, क्या एक्सेस टाइम कितना, इसमें कैसे करेंगे? नहीं, एक्सेस टाइम के लिए क्या लगाते थे, इसे तो पता नहीं। और टीएलबी, हाँ, यहाँ पर टीएलबी, यू कैन ऐड एक्स्ट्रा टीएलबी, बट विदाउट टीएलबी ऑल्सो ही इज सेइंग इफ यू अप्लाई दिस हैशिंग हियर, देन द सर्चिंग विल बी फास्टर. But usually inverted page table is not preferred because my hashing sometimes require a large time. So that's why what they prefer. Why don't you use the same kind of initial paging style with multi-level paging? So the multi-level paging with TLB will be far beneficial than this inverted page table. So कहाँ पर वो inverted page table अच्छा रहेगा? If my RAM size will be little lesser. If my RAM size will be little lesser, 8 या 10 या 100 या 1000 रहेगा, out of this 1000 entries, searching is not a big task for a computer. But if your RAM size is very huge and your number of frames are very huge, that time really it is not applicable. Okay, that's that. So लेकिन वो हैश कैसे करेगा? हैश कैसे करेगा मतलब, आप इसको इसको कंबाइन कर दीजिए, PID एंड पेज नंबर को कंबाइन करके एक एंट्री कर दीजिए, एक एंट्री कर दीजिए। सो इसको आप की मानोगे एंड इट विल बी जनरेट ए वैल्यू फॉर दिस, एंड वैल्यू इज नथिंग बट ए इंडेक्स। क्या होगा फॉर्मूला? तो आप जो डाल पाओगे या एक कंबाइन करो 73, मैं बोलूंगा कि 73 कहां पर रखोगे, दिस 73 हैज टू बी पुट बाय ए 73 मॉडुलस 11 करूंगा, तो कहां पर वो रहेगा एज पर योर इंफॉर्मेशन। सो 66 मतलब 9th प्लेस में, 9th प्लेस में मतलब दिस मॉडुलस 8, 8 by 9 means 1, 1th प्लेस में रहना चाहिए। इफ माय हैश फंक्शन इज लाइक दिस, if my hash function is hk equal to k modulus 11, then my 73, this 73 has to be placed where? 73 modulus 11 is 6 means 4, oh sorry, 4 plus 3 7, 7 means in the 7th place it is going to be stored. Got it? तो सर वो हमको एक्सपेरिमेंटली देखना पड़ेगा कौन सा अच्छा होगा। No, that's why no, since you are going for the experimentally checking, this may not be a right approach at every scenario. Okay. Fine. So next comes very interesting that we have studied the paging for what purpose? Tell me why you are learning paging? External fragmentation remove करने के लिए. That's why you are using paging. But what the paging says that my whole program will be divided into number of pages. But हम क्लास में क्या पढ़े? Sir, the whole program will be divided into 4 segments.
We never studied that it will be divided into number of lines. We studied that, sir, below है code segment A है, data segment A है, heap A है, stack. Yes. We studied like a segments. And if you go for the 8086 or 8085 कोआ में अगर पढ़ रहे होंगे architecture, there is extra segment, a data segment, a code segment. There are many segments are present. Means your program has to be felt like a segment. So that's why from user's point of view, your program is basically a collection of segments. The collection of segments. From what point of view? User's point of view, the program is a collection of segments. Then why don't you use these segments and prepare this mapping? So that is basically called as a segmentation. Yes. Then how the segmentation works here? Let's assume that my program has 4 segments. Please, very interesting. My program has 4 segments. So one is data. Please try to understand data. Then it is a code. Sorry, हम कैसे पढ़ते थे? Code data, no? Code. Then data. Then heap. Then stack. Yes. क्या? ओ छोड़ दीजिए. हम एक प्रोग्राम को 4 सेगमेंट में डिवाइड किए. Suppose this code size is 30 bytes. This is 10 bytes. This is currently 50 bytes, and this is 90 bytes. Ready? Program is ready. Program name is what? P1. Where it has to be run? Definitely it will be run by whom? Run by the CPU. CPU क्या generate करेगा? Logical address. यहाँ पर logical address क्या होना चाहिए? बोलिए. 4 सपोज एक एग्जीक्यूट कर रहा है, सपोज एक स्टैक का लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा है, सपोज एक डाटा का लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो सीपीयू क्या जनरेट करेगा? 2 पेजेस करेगा 2 बिट्स का कौन सा लाइन. सही होगा कि नहीं? वेरी सिंपल तरीके से सीखते हैं. सीपीयू क्या बोलेगा कि मुझे डाटा सेगमेंट का 3rd लाइन को रन करके मुझे दे दीजिए. सो क्या देगा? ही हैज टू बी गिव ए सेगमेंट नंबर with offset. The offset is the line number of this. Okay. Suppose a segment number there, let's take it is a 01 and offset there 35. Okay. क्या दिया? 01 and 35. इतना दिया है. But this particular segment, what I felt here, is it logical or physical? Logical. Because ये 4 GB का कभी-कभी बोलते हैं logical है, but it is not physical. But when you run this particular line, it must be present in the RAM or not? Yes? Then what you need? These particular lines has to be brought to the RAM. Then how it will be brought to the RAM? Let's assume that my heap segment comes here. And this is become 50. My data segment comes here. This is become 30. RAM को segment में divide कर दिया. Yes? अभी नया सीख रहे हैं, क्या करेंगे? वो कर दिया ऐसे, हम सीखे, हम भी एक्सेप्ट कर दिए. वो क्या किया? It is 50 and it is 30. How interesting it is. Your question will be answered after 10 minutes, not now. 10 है 10 है 10 है बोल रहे. कोड सेगमेंट यहां पर आ गया, that is 30 and यहाँ स्टैक आ गया, then it is 90. Then assume that one program is currently running, assume, and these segments are currently present here. What's the address? 300, 950, 1035, and this is 2000. So in which location present? These segments are present here. And what it all? The whole segment has to be present at one chunk. मतलब पूरा का पूरा एक segment एक ही जगह पर रहेगा. So what is the difficulty will come? You may not find whole segment space maybe at one chunk. That is one problem. But currently we avoid it. What you thought? Each segment has a different size and each segment will be placed in a different location of the RAM. Then he is saying, I want these 0th lines, 0th segments, 35 line. Can anybody tell me in where it is present? Quick answer. 01 segments, 35 line will be present in which location? Quick answer. 01 programs, 35 line will be present in which location?
950 plus 35. You can say 1035. Suppose I numbering as a 00, 01, 1011. Can now you can tell me where it went? 1035 plus 35. 1035 is my first one, and in this case, which line? 35th line means 1035 plus 35 will be 1070. No? 70. My logical address is 0135. My physical address should be 1070. And how it is going to generate? And now this information has to be kept somewhere. Like when the pages has to be present in the RAM, you are maintaining a page table or not. So here also he is maintaining a table called as a segment table. What is that? Segment table. This segment table has two parts. Very interesting. How many entries has to be present here? Sir, there are 4 segments, means 4 entries. But each segment has how many parts? 2 parts. One is called as the limit and one is called as the base. And what is the indexes? So indexes are 00, 01, 10 and 11. Can you tell me here 00 कौन सा लोकेशन में है? थोड़ा बोल दीजिए पूरे तुरंत. कोड कहां पर है? कोड हमारा सॉरी स्टैक कहां पर है? 2000 पे. समझ पाए? बोलिए 101 कहां पर है? हीप कहां पर है? 1035 पे. देन 10 कहां पर है? डाटा सेगमेंट इज 300 पे. देन 11 कहां पर है? 11 है हमारा कोड सेगमेंट 950 पे. Then what is this limit? Limit register कुछ पढ़े थे at the beginning of the memory management. What is the purpose? तो लिमिट करता है एक्सेस को. Can you tell me what is the protection here? प्लस 90 और कुछ था. The number of segments are different, and also each segment has a different size. But if you can go to the paging, each page has the same size. हर एक पेज 4 KB का है. बट यहां पर देखिए कोड सेगमेंट अगर 30 लाइंस का है, डाटा सेगमेंट विल बी 10 लाइंस. दैट्स व्हाई व्हाट इज ही इज रिमेंबरिंग दिस इंफॉर्मेशन हियर. क्या रखेगा? 90, 50, 10 एंड 30. एक बार सीख जाइए और कुछ नहीं चाहिए, 10 मार्क का पूरा बन जाएगा. यस. तो इसमें वो नहीं करेगा, वो बेस के साथ ऐड नहीं करेगा. नहीं वो कुछ नहीं किया है. आप थोड़ा ज्यादा बोल रहे हैं. मैं आपको चुप कर दिया. वो कुछ नहीं करता है. इतना हो गया, बन गया. So 2000, 1000, 35, 300, 950 is the base address. This is the limit. Once the CPU generates this logical address, you tell me, you don't know. Let's take. आप पढ़े नहीं अभी तक, कैसे सर्च करेगा? मुझे टारगेट क्या है? 1070. कैसे सर्च करेगा? आप लोग बोलिए इस डायग्राम को देख के. इंडेक्स. ये पहले ढूंढेगा कि 01 कहां पर है. सही कि नहीं? इसके बाद क्या करना चाहिए? मिल गया इसको. फिर क्या करना चाहिए? लिमिट एक है, लिमिट को चेक करेगा. लिमिट को किसके साथ चेक करेगा? अरे दिस 35 नो, दिस 35 हैज टू बी वेरीफाइड विथ लिमिट. इफ इट इज एस, इफ इट इज नो, ट्रैप. ट्रैप क्या है याद है? व्हाट इज अ ट्रैप एंड इंटरप्ट? सॉफ्टवेयर इंटरप्ट. ट्रैप. It is a trap or it is an interrupt? ट्रैप. क्यों ट्रैप? फिर ट्रैप क्या है? इंटरप्ट. सॉफ्टवेयर है इंटरप्ट. वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच. सो वही आ गया. अगर ये ट्रू है, किसके साथ मिलेगा? If 35 is less than 50 means it is a valid address or not? तो किसके साथ मिलेगा? वो दोनों ऐड हो जाएगा. And this will be combined together and generate this. Finish. Segmentation over. That's आ गया. निर्वाण, सॉरी दीपंकर, हो गया? पता चला? यस सर. हाँ, तो अभी डाउट नहीं है क्यों ये नहीं आता अभी. सो आर यू गेटिंग हाउ इट इज मैपिंग? सो योर होल प्रोग्राम विल बी डिवाइडेड इनटू प्रोसेस. बोल दीजिए, आप खुद लिखोगे, कुछ याद रखना नहीं है. कैसा हम किए? पहला हमारा प्रोग्राम है लेफ्ट हैंड साइड में, दैट साइड. दिस प्रोग्राम इज बेसिकली व्हाट? कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सेगमेंट्स. ईच सेगमेंट विल बी प्लेस्ड वेयर? इन द रैम. Every segment has to be placed in a single chunk. Wherever it is present, it has a base address like 300, 950, 150. This information you maintain in what? In a segment table.
व्हाट इंफॉर्मेशन इज मीटिंग, सेगमेंट कहां पर है, कहां से शुरू हुआ था एंड कितना साइज है. सो दिस इज स्टार्ट एट 300 एंड फॉर 10 लाइंस. This is start at 950 and this is become 30 size. Like this it is stored. Then CPU generates a logical address. This logical address has what? A segment number and offset. And this segment number will be first searched in the segment table. Corresponding to the segment number, he will find the limit. That limit has to be compared with the offset. If my offset or the line number is less than or equal to this limit, means it is a valid address. This valid address, how it will combine? Base address along with this offset will be generate a physical address. Yes, this is called as segmentation. Yes, doubt. क्या क्या होगा? On one. Yes. Yes. Now, since I told that first you are saying, first time you are learning segment, I also told that only one program currently stored. That also I assume. And as per requirement, if only one data line is executing, is it necessary to store all? Not. It is not. But first time you are learning like this. What kind of problem comes in this kind of segmentation technique? Yes? Segmentation. Internal. Internal. हाँ. सब कुछ तो ना बोल दिया. क्या प्रॉब्लम होगा? फर्स्ट वन, व्हाई यू आर Used हो जाएगा. एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन. क्यों ऐसे होगा? आप देखिए, बिकॉज यू आर कीपिंग वन सेगमेंट हियर, अनदर सेगमेंट हियर. If this segment will be removed, what happens? This 30 lines will be free. This 90 lines will be free. 120 lines will be free. If a segment comes of 100 size, can you keep it here? Still you can. Yes or no? Why? Because I am keeping a simple chunk at one place, and if that chunk will become free and another chunk at another area become free, I cannot combine together. I cannot use a compaction there. Then how to avoid this? क्या सीखे थे? इसको कैसे सीखे थे? एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन कैसे रिमूव करते हैं? कॉम्पैक्शन. कॉम्पैक्शन तो नहीं हो पाएगा, बोरिंग चीज है. फिर क्या सीखते हैं? Paging. Then why don't you add a paging with segmentation? सेगमेंटेशन बोलता है कि मैं यूजर भी हूं, बट बोलता है कि मेरा एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन प्रॉब्लम है. फिर मेडिसिन खा लीजिए. क्या मेडिसिन? पेजिंग का मेडिसिन खा लीजिए, सो दैट सेगमेंटेशन एक रियलिस्टिक है. उसके बाद ए मेडिसिन है पेजिंग, देन इट इज कॉल्ड एज अ सेगमेंटेड पेजिंग और सेगमेंटेशन विथ पेजिंग. सेगमेंटेशन with page. Why I am telling in this manner? Because it is not like theory. Rather, gradually this process has developed in this way. Because a problem आया, इसका a solution है. So कैसे add करेंगे ऐसे ऐसे? Yes. So एक में we have 10 minutes. We will just draw one figure. Then we'll stop. Assume that I have. Please listen. I have a program of 1024 lines. कितना है? 1024 bytes means 1 KB का प्रोग्राम. So कितना लाइन्स होगा? 1024. Can you tell me what should be the logical address space, logical address size? Logical address size 1024 lines है. 1024 bits. 2 to the power 10, 2 to the power 10, 10 bits चाहिए. Yes or no? So this requires a 10 bits. So logical address है 10 bit का. याद रखिए. हाँ, फिर ऐड करोगे. 10 बिट हो गया. फिर नेक्स्ट सीखिए. मेरा 4 सेगमेंट है एंड मैक्सिमम सेगमेंट साइज इज 256 बाइट्स. क्या बोल रहा है? 4 सेगमेंट्स एंड मैक्सिमम सेगमेंट साइज, मैक्स सेगमेंट साइज इज इक्वल टू 256. समझ पाए? सो कितना रहेगा ये? ए 256, ए भी 256. इसको सोच लीजिए ए 256 का है, ए भी 256 का रहेगा, ए भी 256 का रहेगा, ए भी 256 का रहेगा. सो लॉजिकल एड्रेस स्पेस कितना हुआ? लॉजिकल एड्रेस स्पेस कितना हुआ? 1 KB. अरे लॉजिकल एड्रेस स्पेस पूरा प्रोग्राम ना 1 KB.
कितना सेगमेंट रहा? 4 सेगमेंट। नंबरिंग कर दीजिए 0 0 0 1 1 0 1 1। एक एक सेगमेंट में कितना लाइन्स है? एक एक सेगमेंट में 256। 256 लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना बिट चाहिए? 8 बिट। के लिए कितना बिट है? 2 बिट। 2 + 8 कितना हो गया? 10 बिट्स। मतलब my 10 bits will be now divided into what? Segment number 2 and 8 and offset. समझ पाए? ऑफसेट में कितना बिट रहेगा? 8 बिट। 8 बिट क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ लाइंस। यस, बिकॉज यहां पर 256 लाइन रहेगा, बट द होल 250 1 minute the whole 256 size you are not going to keep it inside the RAM. The two problems comes. One है external fragmentation, एक है इतना बड़ा साइज का चंक नहीं मिल पाएगा, तो उसको क्या किया? वो इंट्रोड्यूस किया पेजिंग। पेजिंग क्या बोलता है? सर आप डिवाइड कर दीजिए होल रैम को नंबर ऑफ पेजेस में। देन मुझे पेज साइज चाहिए। पेज साइज क्या है? अज्यूम दैट द पेज साइज इज 64 बाइट। पेज साइज कितना है? 64 बाइट्स। बोल पाओगे अभी? एक सेगमेंट कितना अभी पेजेस में डिवाइड होगा? क्विक। अरे एक एक पेज कितना साइज का है? फिक्स साइज 64। देन एक एक सेगमेंट आपका कितना पेज में अभी डिवाइड होगा? 4 पेजेस में। 256 आप बोलोगे कि सर ये जो सेगमेंट है ना, सोच लीजिए कि 4 पेज में डिवाइड। यस, सो इसका फिर पेज नंबर क्या रहेगा? पेज नंबर इसका क्या रहेगा? नहीं, पेज नंबर इसका क्या रहेगा? सर A00 A01 A010 एंड A11। सही किया कि नहीं? क्योंकि ए है आपका सेगमेंट नंबर, एक सेगमेंट का अंदर नंबर ऑफ पेजेस हुआ, एंड दिस इज माय पेज नंबर, पेज नंबर्स फॉर दिस सब नॉट। यस, सपोज कोई एक एड्रेस लिखा है 01 10 10 00 1 2 3 4 5 6 7 8। Can anybody tell me which line it is exactly? कौन सा वाला लाइन है? बोलिए, कौन सा वाला लाइन है? दिखाई देता ना? हाँ, कौन सा वाला लाइन है? आप बोलोगे सर लाइन के हिसाब से अगर देखेंगे हम 1 2 4 8 16 32 64 128 कितना 256 161 प्लस 128 प्लस कितना 32 प्लस 1 है कि नहीं? सो दिस इज द लाइन नंबर यू आर सर्चिंग टू बी एग्जीक्यूटेड और नॉट। बट वो लाइन कहां पर है? आप अगर देखेंगे सर 256 मतलब ए पूरा हो गया, सर 128 मतलब एक ए भी फिल हो गया, ए बचा 32 प्लस 1 मींस 33 लाइन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेज यू आर सर्चिंग ऑफ। एक्सेप्टेड और नॉट? समझ पाए कि नहीं? नहीं समझ पाए? नो नो प्रॉब्लम। अब बोलिए टोटल नंबर कितना होगा? इसको ऐड कर दीजिए, तो कोई एक ऐड कर दीजिए, कितना होगा टोटल में? 6 2 8 8 16 16 1 17 1 मतलब 3 1 4 3 1 4 4 5 9 2 11 1 2 1 3 1 4 417 लाइन। सो 417 लाइन अगर ए 256 लाइन है, यहाँ पर आफ्टर दिस हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइंस? 128 प्लस 33 वहां पर आएगा कि नहीं? सो अभी क्या डिस्टिंग्विश हो गया हमारा? डिस्टिंग्विश हो गया कि सर ये जो पेज आप, ये जो लाइन आप ढूंढ रहे हैं, ये सर 01 सेगमेंट का 10 पेज का which लाइन? 33 लाइन। करेक्ट और नॉट? यस नो? दैट नेक्स्ट क्लास सीखेंगे। यस, मतलब ये आपको पता चलता है। यस, नेक्स्ट क्लास सीखेंगे। अब आइडिया विदाउट सीइंग द बुक, यू जस्ट थिंक अबाउट दैट। ये जो छोटा छोटा पेजेस है ना, ए पेजेस ये कहां पर रहेगा बोलिए तो? अभी और एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन होगा, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन कितना
सबको थप्पड़ लगाया जाए खुद को। कितना कितना इंटरनल फ्रेगमेंटेशन लास्ट को हम सीखे हैं पहले पेजिंग में, वही बस बोल रहे थे। ये जो कोड सेगमेंट है ना, क्या 256 का हम फिक्स किए हैं, लेकिन 256 का हर टाइम रह सकता है, कोड थोड़ा कम हो जाएगा। सपोज 250 से 6 यहां पर हो गया। सपोज डाटा बस 100 लाइंस का है, 156 वहां पर है, सो इसे कितना होगा? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन विल बी 1 2 3 4 प्लेसेस में इंटरनल, because previously you are thinking whole program is one thing and you are dividing into pages. Now क्या सोच रहे हो? होल प्रोग्राम 4 पार्ट है, ईच पार्ट में छोटा 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 पार्ट है, मतलब इस पार्ट में भी पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, इस पार्ट में भी, इस पार्ट में भी, लाइक हाँ हाँ वो भी होगा, वो भी होगा, वो भी राइट। ओके, नेक्स्ट क्लास रेडी कर। नेक्स्ट, ओके, आई एम एंडिंग नाउ। हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हाँ प्लीज पूछिए। सर लेकिन इसमें सर अजीब आंसर क्यों है इसमें? वो जो यूजर से आ रहा है, जो ये क्या था, सेगमेंटेशन नंबर ऑफसेट। क्लास देखेंगे, अभी यहाँ पर Okay, क्लास sir. चल जाएगा, इसलिए बंद कर दे। हाँ, Yes.